Loud chants of Har Har Mahadev and Bam Bam Bhole resounding on the pilgrimage route in Jammu and Kashmir. See the level of excitement and enthusiasm among the devotees here. With great religious fervor, they are leaving for the Kashmir Valley, and this yatra is taking place in the Kashmir Valley. The holy cave of Lord Shiva of Sri Amarnath Ji is located in Kashmir Valley, and every year this yatra is organized, and this year the yatra will begin from July 3, that is tomorrow, and it will conclude on August 9, that is Shravan Purnima. And here you can see the level of excitement among the devotees. मन में कितनी प्रसन्नता है? बहुत प्रसन्नता है साहब, बहुत आनंद है। बाबा की पूरी कृपा है कि पहले जत्थे पे हमारे दर्शन हो रहे हैं। Set to begin from the 3rd of July, the annual pilgrimage returns after the recent Hindu massacre in Pahalgam. For the believers, however, bombs and bullets are no reason to fear. In 2 decades, it is the first time when helicopter service will not be available for the Amarnath pilgrims. This has not only done for the security purposes, but there is also another motive behind it, so that the laborers and the poniwalas can earn some money, because they have all hopes on this Amarnath Yatra. बिल्कुल उत्साह है जी, भोले बाबा के दर्शन करने का पूरा उत्साह है हमारे को। सर तमन्ना है बहुत एक बार जाने की, एक बार और जाने की सर। बहुत शानदार व्यवस्था है, एक दिन हम एडवांस में हैं, कल छोड़ेंगे, कल निकलेंगे। जय बोलेगी। Following the terror attack, the Indian Army, CRPF and the Jammu and Kashmir Police have rolled out a comprehensive security framework with a clear objective: protect pilgrims and thwart any potential threats along the pathway. National Highway 44, a vital artery for the pilgrimage, is under constant watch by the Valley Quick Action Teams and further scrutinized through live drone surveillance. Joint security blueprint involves the deployment of commandos, bomb disposal squads and K9 units alongside marksman bulletproof vehicles along the route. ये यहाँ से जो अमरनाथ यात्री हैं उनको पैदल भेजा जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि या तो खच्चर के जरिए या पैदल या फिर पालकी से यहाँ से जा सकते हैं। तो इस बार जो है व्यवस्था अलग तरीके से किया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी में किसी भी तरीके की चूक ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये कदम बढ़ाया गया। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसमें भी खासियत ये है कि ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति का फेशियल रिकॉग्निशन इस बार किया जा रहा है। Amid enthusiasm for the Amarnath Yatra, focus returns to tourism. Operators, pony riders and local residents in Pahalgam going all out to welcome the Amarnath Yatris. This is the first batch of Yatris who have arrived in Pahalgam. Now, unfortunately, the place has been, for all the wrong reasons in the news, starting from the Pahalgam terror attack. And this is being seen as an opportunity, as far as local is concerned, to send the right message. They are welcoming these Yatris. They are being garlanded, flowers, petals being thrown at them. ये मेरी 11वीं यात्रा है, और जो मैनेजमेंट आर्मी वाले का है काफी अच्छा है। पहलगाम हमले के बाद जो डर बताया गया था यात्री का, उसके उलट वो दृश्य आपके सामने। तो मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ। कुछ चीजें अभी हुई थी पहलगाम, जिसकी वजह से थोड़ा फैमिली में भी प्रेशर था कि जाए ना जाए, लेकिन आई फुली ट्रस्ट दी गवर्नमेंट, और बाबा तो है हमारे साथ, और अगर उनका आदेश है तो फिर उन्होंने जो डिसाइड किया है उसके मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे। Long queues were witnessed at Srinagar's Pantha Chowk Yatri camp as devotees. Pahalgam terror attack has led to more registrations to the Sonmarg Baltal route compared to the Pahalgam Chandanwari side. This Amarnath Yatra in 2025 also brings spiritual healing to Jammu and Kashmir and the Yatris. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.